So we'll do the 10th question now. Next question is, evaluate the role of Indian diaspora in strengthening India's economic and cultural ties with the Middle East, and how is this influenced bilateral relations and economic cooperation. So introduction, you can talk about the numbers, like how there is more than there are more than 5 million people, or how there is how they are a key driver in socio-economic and cultural development of India, in diplomatic engagement, how they help in increasing the diplomatic engagement and increasing our strategic autonomy in general. Or you can and then ending, like diaspora is again part of the static. You can prepare introductions, conclusions, solutions. Going forward, you can talk about the LM Singhvi committee that spoke about thinking about the option of dual citizenship, or thinking about giving more rights, more opportunities, more mobility in terms of access and opportunities both in India and in the other country. And then you can talk about solving the issues that you will say are there. Question asks about the role of Indian diaspora in India's strengthening economic and cultural ties. So 2 parts, and has this influenced bilateral relations? Connecting it, 3 parts. So economic, how is it influenced? Remittances, labor force participation, skilling, bringing about technologies, bringing about fusion of ideas, fusion of technologies. They are running businesses there, like the Yusuf Ali running businesses in Kerala and in Middle East. You have stalwarts, like other stalwarts also, like Yusuf Ali. You have cultural this thing, like Diwali being celebrated, Onam being celebrated in Middle East, or Eid being celebrated equally in Kerala and in Middle East, or like many cultural this thing, like Bollywood movies being a super hit in Middle East or in other areas. You can talk about languages, how certain languages like Malayalam are being very famous in certain Middle Eastern countries, or Hindi being famous, or something like how literature traditions, or something like movies, something like dress code, or something, anything cultural factors. Think about the different cultural parts and think about how they are, how you can connect it to the question. And then second part of the question is, has this influenced bilateral relations and cultural cooperation? So here you can talk about how like UAE, we had a recent UAE FTA, how the diaspora played a role in ensuring these economic and this thing contributed to this. Alternatively, you can talk about diplomacy in terms of COVID-19. You can talk about trade, India-Saudi trade, India's oil requirements, oil imports, gas imports from Middle Eastern countries. You can talk about energy security. You can talk about connectivity. You can talk about connecting India to Europe through Middle East. Or you can talk about the IMEC project. You can talk about everything that was in recently in news connected with diaspora, connected with the question demand. And ending, you can, as I said, you can connect it with the LM Singhvi committee, or you can quote any like if you can connect it with a book also, that is also interesting, or you can solve the solution problems that you are noting in the question. Hi, a very good evening to all of you. I hope prelims 2024 आप लोगों का सही से हुआ होगा. Now is the time when you should prepare for mains wholeheartedly. And to help you in assisting in this endeavor, we are coming up with a very important program known as Civil Services Accelerator Program. देखो मेंस में आपको हर कोई बोलेगा कि 450 नंबर GS 1 2 3 4 में आने चाहिए, ऐसे में 120 130 आने चाहिए, बट हाउ टू अचीव इट, वो करना कैसे है, कौन कौन से वो पिलर्स है जिन पे हम फोकस करने वाले हैं. तो पिलर्स देखो बहुत बेसिक है. फर्स्ट वी गोइंग टू इंश्योर दैट जो भी हम यहाँ करंट अफेयर की क्लासेस लेंगे दे गोइंग टू बी लिंक्ड विद द स्टैटिक पार्ट, सो दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. चाहे यूपीएससी फिर बाद में स्टैटिक पोर्शन से पूछे या फिर करंट से, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा. सेकंड इज अबाउट एथिक्स, कि आप एथिक्स अच्छे से कवर करिए, बोथ पोर्शन section A as well as the case studies, and if you do it properly you will get very good marks. Then philosophical essays, सबसे कम मार्क्स आजकल एस्से में आने लग गए स्टूडेंट्स के, 80 90 100 तक मैक्सिमम लोग स्टॉप हो जाते हैं. तो हाउ टू इंश्योर दैट कि वो मार्क्स हमारे 130 तक पहुंचे, उसके लिए हम ऐसे फोकस करेंगे. एंड देन यू गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज व्हिच इज गोइंग टू इंश्योर कि यार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओ और इवेलुएट कर पाओ अपने आप को. एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज व्हिच वी गोइंग टू फोकस अपॉन. इनफैक्ट दीज आर द पिलर्स ऑफ mains preparation. For current affairs, a team of faculties including me, we are going to assisting you in each and everything. We'll have Rajvardhan sir, we'll have Neha ma'am, me alongside some other faculties will also be part of this. We'll focus on 3 areas. Okay, जो टॉपिक बहुत स्टैटिक लगते हैं लेकिन वहां से करंट का क्वेश्चन हर बार आता है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले से ही संभाल के रखेंगे. सोसाइटी के बहुत सारे टॉपिक हैं ऐसे जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, लगता नहीं है कि आएगा बट आ जाता है. ट्रेंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन, क्लाइमेट चेंज, ऐसे ऐसे जितनी भी थीम है वो इसमें आएंगे. एंड थर्ड, ईयर स्पेसिफिक.
ईयर स्पेसिफिक मीन्स दैट इस साल जैसे मान लो साइंस एंड टेक में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हैं तो यूपीएससी वहीं से पूछ लेता डायरेक्ट क्वेश्चन. सो दोस काइंड्स ऑफ करंट अफेयर विल आल्सो बी कवर्ड. सो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, दिस इज द कोर्स फॉर यू. कि सारी आपकी करंट अफेयर की चिंता फिनिश. With respect to ethics, we have one of the most stalwart person, Atul sir. Atul sir has been teaching for more than 13 years ethics. है ना, जब से शुरू हुआ है 2013 से पेपर, तब से सर पढ़ा रहे हैं. And if you want to get his mentorship, then eventually जितने भी प्रॉब्लम्स आती है एथिक्स में वो सारी सॉल्व आउट हो जाएंगे. चाहे वो आपकी बेसिक कंसेप्ट हैं, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं, इफ यू नॉट एबल टू इंक्लूड द थिंकर्स इन द आंसर, वो भी सॉल्व हो जाएगा. Along with the answer writing is going to become very very refined. In fact, he has already taken an orientation session. You can just watch it on our YouTube channel and you will get very good outcome for that. एथिक्स में जो होंगे लगभग 20 घंटे के आसपास क्लासेस होंगी. आपको पीवाईक्यूज वगैरह के लिए हेल्प की जाएगा, हैंडआउट्स दिए जाएंगे, अच्छे एग्जांपल जाएंगे, एंड प्लस मोर इंपॉर्टेंटली 1-to-1 मेंटरशिप इज गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट. सो एथिक्स इज वन एरिया वेरी इंपॉर्टेंट. Then comes the essay. In the essay, we are going to focus upon philosophical areas. तो पहले वहां पे आपको टीच भी करेंगे, me along with Manikant sir as well as Kapil Sikka sir. We are going to be part of this so that those of you who can eventually get the best out of yourself, आपको कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए. So focus किस चीज पे रहेगा? Coverage of all the important themes which are there in the PYQs. और सबसे ज्यादा फोकस फिलोसफी पे ही करेंगे. Then handouts दिए जाएंगे, आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी कराई जाएगी. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू कैन स्कोर वेरी हाई इन द एसे. लगभग 25 से 30 घंटे की क्लासेस होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट, कंपाइलेशन, वर्कशीट, 1-to-1 मेंटरशिप, सारी चीजें आपको अच्छे से दी जाएंगी. एंड इफ यू आर एबल टू अचीव इट, मेक श्योर दैट कि आप तरीके से उसको यूटिलाइज करें एंड फाइनली आउटकम लेके आए मेंस के अंदर. एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू टेस्ट सीरीज, ऑल द फैकल्टीज आर गोइंग टू बी टुगेदर टू इंश्योर दैट जो भी आपका एरिया होगा उसमें आपको अच्छे लेवल का हम आउटपुट दे पाए, आपको अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड कर पाए, चाहे वो GS 1, 2, 3, 4 या फिर ऐसे पेपर हो. So that's why you're going to have a test series also along with this. And in this test series, we have to make sure questions quality, model answers, the discussion sessions, all of them they are top notch, so that इस साल जो मेंस है आपके लिए एक eventually game changer बन जाए and we are able to become a part of your success journey. This is the objective with which we are starting this program, and this program is going to be very very useful for all those students who are eventually becoming part of the mains for this year. अभी prelims का रिजल्ट आने वाला है, so let us hope majority of you have worked very hard, आपका final call आ ही जाए. Many sessions are going to happen. Some have happened, like ethics का session has already been taken by Atul sir and June 25 was taken. Essay का जो है 2 जुलाई को होगा. Answer writing template का जो session है, it will be taken by the rank 4 of this year. It's going to focus specifically on paper 2, paper 3. Current affair की classes 28 जून को first होगी. It will be dealing with IR. इसकी सेकंड क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक ऑन द जुलाई ऑफ 4th होगा. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, आप इन सेशंस का पार्ट बनिए. दीज सेशंस आर ओपन इन नेचर. ट्राई टू गेट योर डाउट्स रिजॉल्व्ड एंड वंस यू फील लाइक नहीं ट्रस्ट आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है इस इंस्टीट्यूट पे, देन बिकम अ पार्ट ऑफ द program, and once you become part of this program, we'll take care everything from your side. Okay, so all the very best. If you have any query, any doubt, you can reach out to these numbers. These numbers, if you dial, you'll get the link to our counselors and they will help you out in understanding. If कोई डिटेल में आपको लगता है कोई इश्यूज लग रहा हो कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया अच्छे से, they will help you out with respect to that also. And for all the important kind of videos, you can stick to our YouTube channel and we're going to help you out in the whole UPSC civil services preparation. All right, all the very best. Thank you so much.